Hey guys, welcome back to my channel. I'm your friend Yakshit Jain, a recent CA Inter pass out, and in this video I'll be sharing the last month plan for CA Foundation September 25 attempt, and it is going to be a very detailed video whereby I'll be telling you about all the 4 subjects, how to revise each of the 4 subjects: accounts, law, quants and economics. So if you're new to my channel or if you haven't subscribed my channel yet, then do hit the subscribe button and also like this video and share it with your CA buddies. Do not skip any part of this video because trust me, it is very useful. It is going to be very useful. You can switch to 1.5x to save time. So starting with the first subject, which is accounts. For accounts, your first aim has to be to clear all your concepts. So just go search for any marathon video of your favorite professor or faculty and usko फटाफट देख लो. Don't invest ज़्यादा time on concepts because you have to solve a lot of questions for accounts because practice is key for accounts. So फटाफट 3 to 4 days में you revise all the 4 to 5 days में you revise all the concepts and then directly jump on to question solving part. Now for questions, your first aim has to be to cover the entire module. By module I mean कि आपको सारे questions at this point of time नहीं करने हैं, वो भी लिख के, because you don't have time. Solve only the A category questions which were difficult or important or which you were not able to solve in the first go. Solve only those questions at this point of time because after all खाली module नहीं करना है ना, हमें बहुत कुछ करना है, बहुत resources है, RTPs है, MTPs है, PYQs है, so and also theory भी है. So ये करना है, इतना सब कुछ करना है. तो module के सारे questions writing में मत करना, important questions लिख के करो so that you get the feel कि how to attempt, how to save time, what are the different types of formats, adjustments है तो पहले adjustment करना है या पहले posting करना है. So yeah, अकॉर्डिंगली मैनेज करना है. एंड आई विल कवर मैथ्स एंड इको टुगेदर. सो दोनों में मॉड्यूल के MCQs इनफ नहीं है. एंड आपको पहले तो कंसेप्ट रिवाइज करने हैं. आप प्रोफेसर के लेक्चर देखो, 2x पे देखो एंड सारे कंसेप्ट एकदम ब्रश अप कर लो एंड उसके बाद स्ट्रेट अप जंप ऑन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स जितने क्वेश्चन हो सके उतने करो एंड RTPs, MTPs. सो आपको all these resources will be available at one place, that is taxman.com का student corner, and where you can find multiple books for CA, CS, CMA, other professional courses. And personally speaking, मैंने भी foundation में refer किया था the Taxman Cracker book, which I found very useful. It is a compilation of all your RTPs, MTPs, PYQs, additional questions, and it gives you a holistic approach कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. इट ऑल्सो हैज़ अ मार्किंग स्कीम एंड द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स. सो आपको बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज का कंपाइलेशन मिलेगा एंड it turns out to be very 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 useful, personally speaking, because I use their books. Also all these books have been designed by the famous faculties. If talking about the CA fraternity, professors like CA Praveen Sharma, Ishwar Mangal and also Namit Arora sir. You can navigate Taxman student from the link given in the description, and to get an additional 10% discount you can use my coupon code YAKSHIT10 and avail the benefit of 10% discount over and above the Taxman official merchandise. Now talking about law, फॉर लॉ मेरा बहुत सिंपल था. आपको इतना रीडिंग करना है कि आपको एक एक वर्ड मॉड्यूल का दिमाग में चिपक जाए. ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू वाइल आंसरिंग, वाइल राइटिंग योर आंसर्स, वाइल फ्रेमिंग योर आंसर्स. नो मैटर ऑफ कितना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, आफ्टर ऑल अगर आपके कंसेप्ट, आपको प्रोविजन, आपको बुक में लिखा क्या है वो दिमाग में लर्न नहीं है, तो फिर यू वोंट बी एबल टू फ्रेम योर आंसर्स इन द एग्जाम. Because after all ICAI है, तो they won't be asking the same questions which is there in your reference book, which is there in the ICAI module. They'll be making different questions, right? How to answer those questions? By making your concept strong, by learning. Important word, learning, not just reading. By learning your provisions. I know बहुत लोग को ऐसा शॉक लगेगा कि अरे बाप रे इतना मोटा बुक में कैसे लर्न करूँ, बट करना पड़ेगा. तो मैं भी यही करता था. इतनी बार 4 to 5 times I used to read the same chapter, same unit. I used to read as many times as possible and कभी कभी आँख बंद करके टेस्ट करो खुद को कि मेरे को आ रहा है कि नहीं. सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू क्रैक एंड टैकल लॉ. आपको लर्न करना पड़ेगा, not everything, but the direct questions के what are the consequences of this, what are the consequences of non-registration in case of partnership. तो ऐसे सब पॉइंट्स है तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राइट? तो उनको आपको लर्न करना पड़ेगा. फॉर द केस स्टडी पार्ट यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर, बट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है. So yeah, this is it for the video. Thank you so much for watching and see you guys in the next video. Till then, keep studying and stay motivated. Bye.